फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Surama Kaushik. Now the second test match is over and everyone's waiting for the third test match between India and England. But ahead of that test, everyone has one question. And that one question is around Ishan Kishan. Where is he? Now Rahul Dravid said a lot of things about Ishan Kishan, that how he can come back to the team, what he has to do for that, and a lot more things. We'll talk about each and everything in detail. But for now, let's focus on where is Ishan Kishan, why he is not playing in any of the matches, in any of the series, and what has turned in his way after the South Africa series, where also he wasn't in the part of the team. Let's talk to Jamie Alter, Taus Rizvi, and Sahil Malhotra. What do they have to say about Ishan Kishan? First of all, Jamie, Rahul Dravid mentioned, that Ishan Kishan asked for rest during that South Africa tour. He was given that rest. Then we heard from Rahul Dravid before the Afghanistan series. There also Dravid mentioned that Ishan Kishan isn't available because he asked for the rest. Then ahead of the test series against England, same thing happened. After the second test match, that question was asked again, and he said that I don't know how to explain it in a better way, and I don't want to keep laboring about Ishan Kishan point. But the biggest question here is, where is he? What is he doing? Why is he not playing? And when can we see Ishan Kishan back in the team? Yeah, look, I think this is an issue which, I think the word simmering would be not the right word, because we've seen this and we discussed it also. I think it was a month ago or maybe more that Sahil said that he heard that something did go down in South Africa, and then there was a story that after asking for a break to get his game in order or whatever it was, he was seen in Dubai. Now, apparently, he was in Dubai for his brother's birthday, or there was something to do with his brother, something there. So, which you can argue, yeah, जब उसने personal break मांगा है, वो family के साथ जाके कुछ भी करे, that's his prerogative. But I'm saying it's just there's so much confusion, so much doubt, and look, I can't say I've heard every single of Rahul Dravid's press conferences, but I can probably say with some authority, Sahil and Tosbhai will also probably weigh in here. Has he ever been so emphatic in addressing an issue that's not going on with what's happened in a day's play? This was a very strong statement from a man not prone to strong statements, right? I wouldn't say Rahul Dravid is vague, but he's very articulate. He's got a great grasp of English. His Hindi is decent. He knows the game like nobody else. But इनको इतने डायरेक्टली किसी चीज पे बात करना या इतना emphatically, मुझे तो याद नहीं कब राहुल द्रविड़ साहब ने ऐसा कुछ बोला. Has he been asked the question multiple times? Of course, I think that frustration came out, but without actually Suramya saying कि हुआ क्या, this is a very strong statement. For me, the main takeaway after the tone with which he spoke was the basic fact कि भाई आपको आना है तो आपको recent form दिखाना पड़ेगा. And as far as recent form goes back, it's been 2 months since he played. His last match was for India, a white ball match in, I think, the first week of December. So, chaliye, aapne break manga. Apparently, he's with Hardik Pandya at a boot camp. That's all fine. लेकिन आप select होते हो match form पर. और अगर आप रणजी नहीं खेल रहे हो, अगर आप कुछ नहीं खेलो, कुछ तो खेलो, very, very difficult for me, putting aside the obvious tension or friction. Very tough to see him come back without any match practice, Unfortunately, I think it's going to be one of those cases like, oftentimes social media पे ये मजाक बन जाता है. ओहो, केएल राहुल का हो गया फिर से इंजरी, ये तो आईपीएल में जरूर आएगा. अरे हार्दिक पांड्या है, इसका तो स्वीट बुक्ड होगा एनसीए में, कोई बात नहीं, आईपीएल पे आएगा. And now hearing Sahil say just before we went live that he's working his ass off with Hardik Pandya, that just says, unfortunately, the bigger picture is going to be ये लड़का तो आईपीएल के लिए ही खेलेगा, and it's going to take a lot of hard work from Ishan Kishan to erase that mark of putting the IPL first, because already his selection को लेकर, his proximity to Rohit Sharma with Mumbai Indians, and now all the problems with Rohit Sharma and Mumbai Indians, like Sahil will add on, I'm sure. It's all going to be tied together. True or not, that's not for us to judge.
but the public perception is going to pile up against Ishan Kishan after what Rahul Dravid has now said, which is unfortunate. And Jamie, also, I found these two statements that Rahul Dravid made, one before the Test series against England and one before the T20 series against Afghanistan. I'll tell you in detail. On 10th of January, Rahul Dravid said that when Ishan Kishan is available, he will play domestic cricket, and that will then be counted as for his selection. Then, just after the second test match, he said, I never said that he will play domestic cricket. He will play in the team once he plays some sort of cricket. What sort of cricket? Now, you see, these two statements are completely different, and these are quoted by Rahul Dravid himself, which means that he is himself not clear as to what to say when someone asks him about Ishan Kishan, which means that something else is going around, isn't it? Absolutely, there's something going on because we don't see traditionally players pull out of a series. Yes, Gautam Gambhir pulled out of a test match because his sister was getting married. Sachin Tendulkar left the '99 World Cup because his father passed away. Virat Kohli, he came back because of his daughter. वो सब ठीक है, but we don't see a player pull out of a tour saying कि मुझे break चाहिए. ये तो I mean अगर याद है किसी को तो बता दो. This is unheard of in Indian sport. Forget cricket, in Indian sport. And someone who's seen as 25, 26, future काफी लंबा है, काफी cricket खेला. ईशान किशन ने पिछले साल बहुत white ball cricket खेला, part of the T20 World Cup planning, part of the One Day World Cup, Asia Cup. So for him to suddenly say कि मैं घर जा रहा हूँ, that was a flashing light. To not hear anything from anyone in public, from the team management or the BCCI, barring one press release, then to hear stories of him partying in Dubai, then to not see him play a single match, for Jharkhand in 2 months. It just adds to the overall confusion. Then we have the contrasting statements that you've raised. We had the other quote which the producer put up. So who knows? I mean, if Sahil knows more, I'd love to hear. But like I said, the bigger picture with each passing day, जब ऐसे confusing statements आते हैं, ऐसे strong statements आते हैं, ईशान किशन खुद नहीं बोलेंगे, और जब तक वो खुद public view में bat और ball लेके नहीं दिखेंगे match पे, it's just going to add to his problems. If you want to look a little bit too far down the line, yeah, look, the moment that Rishabh Pant comes back, Ishan Kishan is going to become even more irrelevant, So let's hope a talent like him is not wasted. Again, I'm not going to pick sides. Obviously, I have views like everyone here does about him taking break and then not, at least on the outer side, not playing a match, because I think match is what gets you selected. We can go about how poor Mukesh Kumar looks when he plays a test match, but all said and done, 21 का first class bowling average लेके वो select तो हुआ ना. How do you get selected? Based on a boot camp with Hardik Pandya? It might get you a batting promotion from Mumbai Indians, but it's not going to get you recalled. Rahul Dravid might be wrong, but he has a process. Rohit has a process. Agarkar has a process. आपने कितने रन बनाए पिछले मैच में? ओ आपका पिछला मैच 2.5 महीने पहले था. बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा. Yeah, and you correctly mentioned there, Jamie, this point of selection, a lot of questions. I'm sure you must have seen on social media, people are asking, what was the criteria of selecting KS Bharath in the team? And especially after the second test match performance, there are a lot of memes and there are a lot of tweets around KS Bharath's selection, but he was selected. And obviously, as you mentioned, there's always a procedure of someone's selection in the team. And now people are saying how Ishan Kishan can be selected. And amidst all of this, when you get a quote of Rahul Dravid where he's saying that Ishan Kishan will have to play some sort of cricket, then it makes even more sense that, Ishan Kishan has to play something. He will have to prove somewhere or the other that he belongs in the team or he has to be there in the 11. Now, Sahir, the last time we spoke about Ishan Kishan, I remember you mentioned, though it was a subtle remark around Ishan Kishan's involvement in some party or the other thing when he asked for a break. And we had a chat, that it's okay for any player to party when he's on break, but this break is longer than anticipated. It was expected from him that he will be missing out on South Africa series, but then he didn't play the Afghanistan one. Now he's absent from the England one also. What's going around with him?
I kind of, this is a situation which has really gone out of hand now, and one thing is very clear that it could have been handled in a much better way rather than Rahul kind of making statements at press conferences. What I don't see is a plan for Ishan Kishan, which has never been the case. If you look at how much cricket he has played in the last 12 months and where he has played cricket, he always has been that, एक स्टेपनी हम साथ में कैरी कर रहे हैं. अगर कोई इंजर्ड हुआ ओपन करा देंगे, मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं है तो चलो एशिया कप में इसको मिडिल ऑर्डर खिला देंगे. ओ अब केएल राहुल फिट वापस हो गया, ईशान किशन वेस्ट इंडीज में हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर था, अब इसको हटा के हम केएल राहुल को बैटिंग डीप कर देंगे. मतलब दिस I think they are not very clear about how and where to use Ishan Kishan, and frustration I think was increasing for him. Yeah, you can't blame the individual. He's a young boy. He's doing whatever is in his control. He's playing wherever they want him to play. He was carrying drinks throughout the Border Gavaskar Trophy, taking those stern messages to Cheteshwar Pujara and doing all that what was required. But he still didn't get a game because बोला गया था कि उसका keeping KS Bharath से हल्का है. वो keeping अच्छा नहीं करता है. वो कीपिंग पे काम किया 4 टेस्ट मैचेस में. I kind of saw him closely working on his keeping, and he has looked a much better keeper than he was 365 days ago. Then I think somewhere last year there was this debate around his Dilip Trophy participation, if I'm not wrong. Sorry. Where the critics were out with the swords that, how can he skip a Dilip Trophy game? Boss, a cricketer cannot play non-stop cricket. You need to understand, even if they are not in the playing 11, जो 15 लोगों का रूटीन रहता है ना, it is equally grilling. सिर्फ वो आप मैच डे का पीरियड हटा दो जहां पे ही इज नॉट गोइंग ओवर द बाउंड्री रोप, बट व्हेन ही इज आउट ऑफ इट ही इज स्टिल प्रैक्टिसिंग, मेंटली ही इज स्टिल रेडी फॉर अ गेम. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन क्रिकेट बॉस. कंकशन सब्स्टिट्यूट बन के आना पड़े, कुछ भी, मतलब कोई इंजरी हो जाए रेगुलर कीपर को, यू माइट एज वेल हैव टू कम एंड कीप फॉर द नेक्स्ट 3 days 270 overs. Who knows? So cricketer is always involved, even when he's not in the playing 11. He's always right there mentally. And for Ishan, I think from what I've gathered, that mental toll was taking a hit. यार मतलब इतने टाइम से वो सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है. साउथ अफ्रीका में उसको जाकर पता चलता है कि वो फर्स्ट चॉइस कीपर नहीं रहने वाला. 2 टेस्ट थे तो आप केएल राहुल की पुअर फॉर्म को ब्लेम करके उसको थर्ड टेस्ट में भी नहीं ला सकते थे. सो इट वाज मोर और लेस डस्टेड फॉर हिम. नवंबर वाज द लास्ट टाइम व्हेन ही प्लेड द T20 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. Since then he has been he's just carried around the team. वो airport lounges से check in कर रहा है, check out कर रहा है, taking multiple flights. If you're telling me that doesn't take toll on your body, doesn't take toll on your mental health, of course it does. And he asked for a break. ब्रेक के बाद में ये जेमी भाई और ताउस भाई के साथ हमारा डिस्कशन हुआ भी था. ब्रेक में वो कुछ भी कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, मूवी देख रहा है, नाचोस खा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है. इट इज किसी का बिजनेस नहीं है. एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग स्टफ व्हिच इज लाइक परमिसिबल बाय द बोर्ड, as long as he is not drinking openly, he's behaving wildly, not posting champagne shower photos on the Instagram. वो सब नहीं. He was just celebrating his brother's birthday. So why is that such a big deal? Why do we become a very sanskari board when it comes to stuff like breaks, mental breaks? And matlab Virat was the last person who spoke at length about the mental issues which he had faced when he was not amongst the runs. So Ishan के साथ नहीं हो सकता, उसको game time नहीं मिल रहा यार. And latest what I've heard on Ishan is this was before Rahul Dravid's statement, as we were discussing just before the show. He's focusing on his fitness. He's working on his fitness and everything and all those things. And I think he and Rahul have that communication line open. I don't know about the rest. I don't know about chairman of selector. I don't know about the current captain Rohit Sharma. As far as I know, he has a communication line open with Rahul Dravid. He is talking to Rahul Dravid, and Rahul has kind of told him that he's not out of reckoning yet. But when Rahul makes a statement कि बॉस कुछ क्रिकेट खेलो, तो वो क्रिकेट आप बताओ ना. आप उसको इंडिया ए वाला थर्ड मैच खिला देते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ. आप बोलते इंडिया ए वाला मैच खेल लो यार. वेयर because you got Dhurv Jurel, you got Upendra Yadav in that squad, so you could have easily gotten Ishan Kishan there if he was in the reckoning. आप उसको क्या मैसेज दे रहे हो? किसी ने बात किया, मतलब ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ. आप उपेंद्र यादव की जगह ईशान किशन को बोलते ये 4 day मैच खेलो, देन हमें पता है आप थर्ड मैच के अंदर. अभी केएस भरत के साथ आप क्या कर रहे हो? जस्ट कैरिंग है. मतलब वो तो मेरे को लग रहा है 10 टेस्ट मैच खिला के आप उसको सिलेक्टर के लिए उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो कि वो 10 टेस्ट खेल जाएगा तो ही विल बी एलिजिबल फॉर नेशनल सिलेक्टर जॉब. क्योंकि right now you don't need a sharp keeper boss because the ball isn't turning square. It's not a raging turner. Keeping is doable. Even a Dhurv Jurel can do that. Even a Ishan Kishan can do that. So more and more, we go deep into the series. We'll continue asking this question to everyone. We'll try to find answers. But right now, I feel a communication line should have been open, and it's just not Rahul's responsibility. I think
the chairman of selectors should keep Ishan in confidence, because you need to know how to handle players, boss, because it takes one wrong call, one bad decision, one bad sentence to ruin a career and put it off track. And I hope that is not the case with Ishan. अब लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे को कहीं कहीं से पता चल रहा है कि शायद वो सीधा आईपीएल खेलेगा, मतलब क्योंकि देखो ना अभी सम सॉर्ट ऑफ क्रिकेट कोच साहब ने बोला, अरे कोच साहब अभी तो चली रणजी ट्रॉफी रहा है, फिर आप बोल रहे हो आई डू नॉट मीन रणजी ट्रॉफी, तो कहाँ जाए वो? जिम्बाब्वे के साथ खेलने चला जाएगा जब सीरीज ही नहीं चल रहा कोई, दे जस्ट रणजी ट्रॉफी, आफ्टर दैट यू हैव द आईपीएल स्टार्टिंग, तो और क्या खेलेगा वो भाई? क्लियर करो ना। इंडिया ए वाले मैच में मौका था, वहां आपने उसको भेजा नहीं, वहां फोन करते ना, ईशान गो प्ले इंडिया ए गेम, वी विल एंश्योर दैट यू आर इन द मिक्स फॉर द थर्ड टेस्ट। इतना क्लियर कॉन्वर्सेशन करने में किसको क्या दे? और अगर आप मेरे को कह रहे हो कॉन्वर्सेशन नहीं करना, सो इट मीन समथिंग इज फिशी। अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो तो समथिंग इज फिशी, बिकॉज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव। मतलब आप ये कॉन्वर्सेशन समवेयर डाउन द लाइन ऋषभ पंत से करोगे ना, व्हेन ऋषभ पंत अटेन्स दैट फुल फिटनेस, यू विल चार्ट अ कमबैक प्लान फॉर हिम। सो यहाँ ईशान का तो कोई कमबैक भी नहीं हो रहा, ही आस्क्ड फॉर अ ब्रेक, आई थिंक इट वाज एक उसने स्नूज बटन हिट किया था, नाउ द अलार्म इज फाइनली रिंगिंग फॉर हिम, ही इज रेडी, तो उसको वापस ले लेते यार, अब उसको क्या प्रूफ कराना है आपने? So I don't understand all this, go back, play some cricket and all those things. I don't understand. No, this is something very confusing, because जिस तरीके के कमेंट राहुल द्रविड़ ने दिए, जब सेकंड टेस्ट मैच के बाद राहुल द्रविड़ ने बोला कि मैंने कभी नहीं कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, बट ही हैज टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ क्रिकेट इन ऑर्डर टू कम बैक टू द टीम. No cricket, just Ranji Trophy. Yeah, and the first question to my mind was, फिर क्या खेलेंगे? And the second question was the same question that I asked Jamie, कि आपने एक महीने पहले तो सेम चीज आपने बोला था कि जब उनको वापस आना होगा वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, तब वो वापस आएंगे. अब आप एक महीने बाद कह रहे हैं लीग खेल लो, और कोई क्रिकेट तो मेरी नजर में चल नहीं रहा. डीडीसी लीग चल रहा है, कांगा लीग शायद ताउस भाई चालू हो गया होगा, या कोई लोकल टूर्नामेंट बॉम्बे में चल रहा है, वहां उसको बोलो अपनी कॉर्पोरेट टीम से, या रिलायंस को बोले कि एक इंटर रिलायंस कप करा दे फॉर to appease the coach that he's playing some sort of cricket. This is what why can't you talk in specifics, boss? मतलब how difficult is it to kind of just tell कि boss हम चाहते हैं वो रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेले. ईशान को मैसेज पहुंचाओ, boss pad up, you have to play one game for Jharkhand, the next game starts on 9th of February. If you're not playing that, you won't be considered for selection. वहां अगर ईशान नहीं खेलता तो उसकी गलती है, बट उसको एक प्लान तो दो. Also, Jamie, the things that Rahul Dravid said after the second test, in that there was this one point that he made, that in absence of Rishabh Pant, we do have other options. We also have other choices. अब वो किन के बारे में बात कर रहे हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं अगर हम, तो वो शायद बात कर सकते हैं केएस भरत के बारे में, ध्रुव जुरेल के बारे में. तो इन ऑप्शंस में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ईशान किशन अगर नहीं भी हुए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है? मैं समझता हूं कि that would be the message, लेकिन यार frankly beyond ध्रुव जुरेल और तो कोई नहीं है. उपेंद्र यादव काफी टाइम से इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, but if ध्रुव जुरेल is surpassed him, I would assume the next in line वही होंगे. But just to play devil's advocate here, बंदे ने first week of December में बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है. In the month of Jan, there were 5 Ranji Trophy matches. Does he need to be told Ranji खेल ले? I'm just playing devil's advocate. इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ना कि मुझे नेट के बेसिस पर तो मैं रिकॉल नहीं होऊंगा. साहिल is absolutely right. एक जहां पे इंडिया ए की बात है, that is not in his hands. But यार, he's a superstar in Ranji cricket. He can tell सौरभ तिवारी भाई कल मुझे कैप्टन बनना है, वो बन जाएगा, right? So what stops him from playing? I get it, Sahil is right, mental fatigue, maybe उसको नफरत आ गई बैट पकड़ने से, लेकिन रिकॉल के लिए what stopped him from playing one of 5 matches? अगला मैच 9 तारीख को है. झारखंड from Jan 2nd to last week played 5 Ranji matches. Maybe he thinks, I'm just, again, devil's advocate, उसको 5-star VIP की आदत लग गई, उसको नगोथने में नहीं खेलना है. अच्छे वेन्यूज तो है, राजकोट में खेलता, राजकोट, पुणे, दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, 5 जगह अच्छे हैं भाई, एक मैच खेलता. I'm just saying, how is he going to come back without turning out? Dialogue is one thing, open channel is fine, but are you going to wait? I'm just saying, maybe someday वो द्रविड़ सर का मैसेज नहीं आया,
बेटा तू 25-26 साल का है, तुझे अकल तो आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल एडवोकेट. इट्स गोइंग टू बी, ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड एनी सिंपैथी कम दिस टाइम, बिकॉज पब्लिक परसेप्शन इज वो तो आलीशान वीआईपी रिजॉर्ट में हार्दिक पांड्या के साथ वो कुछ कर रहा है. Public perception wants to be, oh, this VIP guy got on a Indigo flight, he got on a train, he slogged it out. Perception in these PR-driven days, this is the other kind of PR which ultimately wins you more fans than the Mumbai Indians. So I just think he's not helped himself at all. Whatever sympathy immediately came on December 9th or 10th, yaar, isko break chahiye, yaar, kuch hua hoga. By not going and playing one Ranji match, he's not winning any fan. That's just my devil's advocate take on this. A very valid point. ताउस आपका क्या कहना है? आई थिंक यहाँ पर जेमी ने बहुत सही सवाल उठाए हैं, स्पेशली जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी ने नहीं कहा रणजी खेलने के लिए तो आप खुद खेल सकते थे, या फिर आपको कुछ खेलना ही नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट कॉल आए और आपको टीम बुलाए कि भाई आप आ जाओ, स्क्वाड में आपको शामिल किया गया है एंड यू प्ले द टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? Yeah, absolutely. I agree with Jimmy Bhai and as well as Sahil. I mean, questioning Rahul Dravid, the way things have gone so far, starting from the World Cup where he was ignored, where there was some chance of playing him during the World Cup in one of those games like Netherlands के सामने दे दिया, ये दे दिया. मतलब because he did well in the past, ऑस्ट्रेलिया के सामने 250 मारा था उसने और एशिया कप में भी डिसेंट परफॉर्मेंस करके आया था. तो एक चांस था आपके पास कि भाई आप मोटिवेट करते रहे, बिकॉज 25, आई मीन ही इज ओनली गेटिंग ओल्डर, बट देन वो बैक ऑफ द माइंड रहता है क्योंकि उसको एक ये भी रहता है यार ईशान किशन आ जाएगा तो मेरी जगह क्या होगा, तो आई नीड मोर चांसेस टू प्रूव माई सेल्फ. तो धीरे धीरे वो चांसेस चला गया और वर्ल्ड कप अच्छा खासा स्ट्रेच हो गया. उसके बाद आई वांट टू ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, आई एम बोर्ड, आई एम डन विद द थिंग. ठीक है, ब्रेक भी ले लिया और आपने लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया. उसके बाद सवाल उठने लगे कि भाई कमबैक होगा कि नहीं, ये सवाल आने लगे. इंग्लैंड सीरीज आ गई, फिर कल सवाल राहुल द्रविड़ का आ गया. Rahul Dravid, I was shocked. I mean, I was just looking at the quotes of Rahul Dravid. It's his choice. It's his choice. उन्होंने बोला. तो इसका मतलब क्या है? It's his choice. We are not forcing him to do anything. मतलब ये कहीं तो कुछ है पीछे, मिस्ट्री है इसके पीछे कि भाई ईशान किशन को या तो इनको कुछ सबक सिखाना है, कोई लेसन देना है, या तो कुछ ऐसा बड़ी झड़प हुई है या ईगो इश्यूज बीच में बहुत बड़े आ गए. और राहुल द्रविड़ इसमें क्यों इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि रोहित शर्मा इन्वॉल्व है या कप्तानी की 10 फैक्टर्स ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, बट राहुल द्रविड़ क्यों बीच में इन्वॉल्व होंगे? ही वोंट गेट इनटू द फ्रेंचाइजी थिंग कि उनका ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप, आई डोंट थिंक सो. बट ये राहुल द्रविड़ ये ऐसे कोच है बंदा कि ही वांट्स दैट प्रोसेस, जो जेमी भाई ने बोला, एक प्रोसेस फॉलो करके आए. अगर तुमने टाइम पर नहीं आए, जरा सा लेट हो गए बस के लिए, 1 मिनट भी लेट हो गए, तो आई थिंक ही माइट थिंक यार ऐसा नहीं हो सकता है. ही वुड वार्न करेगा, फिर दूसरी बार लेट हो गए तो चिल्लाएगा, तीसरी बार गेट आउट, डोंट कम टू द. तो ऐसे बंदे हैं, वैसे डिसिप्लिन नहीं. तो अगर आप सोचेंगे कि ईशान किशन वैसे आए तो आई डोंट नो कैसा वो बिहेव करते होंगे. और आपने अगर इन्फॉर्म नहीं किया, अब तो हर बार आपको अपडेट देना है. देखिए आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलो, टीम को आपकी कब जरूरत पड़ जाए तो आपको अपडेट हमेशा देने का है, बार बार देखना है कि हाउ मच ही इज फिट, हाउ मच ही इज कीन टू प्ले. तो कीननेस आपकी तरफ से भी होनी चाहिए. और कीननेस वही मैं जेमी भाई का अगेन आई वुड से कि अगर आप कीन होते क्रिकेट में कमबैक करने के लिए, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट के लिए सीरियस होते ना, तो यू वुड हैव एटलीस्ट गॉन ऑन टू प्ले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट. खेलने चांस मिलता, परफॉर्म करने के बाद आ जाते, आपको आपको प्रेफरेंस मिलता इनके आगे. बाकी 2 कीपर्स ध्रुव जुरेल और केएस भरत के आगे. ध्रुव जुरेल छोड़ दो. दिस गाय हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन इंटरनेशनल क्रिकेट. टेम्परामेंट की बात करें, आईपीएल की बात करें, टेम्परामेंट बहुत है बंदे में. दिस गाय हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन क्रिकेट. तो अभी इनको ही वुड हैव गॉन अहेड ऑफ केएस भरत इफ ही हैड इम्प्रेस्ड इन द ट्रायल्स और मे बी द विकेट कीपिंग ड्यूरिंग द नेट्स और बैटिंग सेशन. तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं. जस्ट दैट ही शुड हैव प्लेड दोस गेम्स. आप बच्चे नहीं रह गए, 25 साल, 25 इज द एज बाय द वे. और अगर आपको देखना है ईशान किशन कहाँ है, तो वो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे. 29 जनवरी कोई अच्छी हाई एंड कार में दिखे, तो उसके पहले जिम में दिखे थे. तो मुझे ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहे, सोशल मीडिया पे डेफिनेटली बहुत बार दिख रहे, व्हिच मेक्स अगेन परसेप्शन का खेल है, which is very disappointing ना ताउस, क्योंकि आप इतने अच्छे क्रिकेटर हैं और अगर आप ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं तो वो तो बहुत ही खराब चीज है. क्योंकि आप
आपको लोग जब ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ सोशल मीडिया में दिख रहे हैं. Well, Jamie, I was the because you first have to tournament. I leave, was the first I'll person take before the I'll press take a conference. last question. Yeah. Thus, I'll come back to you No. because Jamie has to leave. I'll put a last question to him. Jamie, ये काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है पहले 2 टेस्ट मैचेस के बाद कि केएस भरत 11 में नहीं होने चाहिए because of the performances that he has put forth, especially with the bat. 41, 28, 17, and 6 are his numbers with the bat in the 2 test matches. Do you think that he should be dropped from the 11 for the 3rd test match? And if yes, do you think Dhurv Jurel should get a chance? Oh, absolutely. 7 test matches, your average is 20. You've thrown away starts. You were out for your highest score of 41 trying to play baseball by sweeping Joe Root. आप उसके शिकार बने. बाकी आप कभी बॉल से बीट होते हो, edge करते हो. Nothing in this gentleman's batting has suggested that he's good enough for test class. रणजी में मारे होंगे, 116 मारे थे इस सीरीज से पहले. Keeping is very, very good. I wouldn't look at one fumble. When he's good, he's very good. But, it's a wicket-keeper batter. It's not the 80s where आप Alan Knott होके या किरमानी होकर आप अपनी brilliance in keeping के लिए select होते हो. आपको रन बनाने पड़ेंगे. आप उस टीम में खेल रहे हैं जिसकी top 6 बहुत बहुत inconsistent है और आप वो काम नहीं कर रहे हो तो must be a nice guy. I'm a big fan of his keeping, but 7 test matches in this mad packed competitive era and you've averaged 20, आपको मेरे हिसाब से बाहर जाना पड़ेगा. जाएंगे नहीं, but जाना चाहिए. And like Sahil said, square turner नहीं है. अच्छी भली कीपिंग वाले इंसान जिसकी बैटिंग अच्छी है उसको खेलना चाहिए. तो उस हिसाब से नेक्स्ट इन लाइन ऑलरेडी पता नहीं अब वो जुरेल होंगे तीसरे स्क्वाड में, but if he's there, I think he should play. Yes. Okay. Thank you so much, Jamie, for joining with us. It was great having Thank you you. here in this live. And Good we'll discussion, see you in yeah. the next live. Thanks a lot. Okay, we'll continue with this discussion, and we were just talking about whether KS Bharath should be there in the 11 for the 3rd test match or not. And we know that we got the squad for the first 2 test matches, and given that the 2 test matches are over, we are waiting the squad for the remaining test matches. So that brings us to the point, what will happen to the squad and also to the 11. And Sahil, first of all, before talking about KS Bharath, Dhurv Jurel and all, I want to know when the squad will be announced, because we're getting a lot of questions around squad update. So can you please help our viewers understand that? I think there's slight delay because they need to establish contact and have clarity on Virat Kohli's participation, because that is still not clear. And as much as I've checked since morning, I think that they still need clarity on that front. And second is the critical update on KL Rahul and Ravindra Jadeja's fitness. So the moment they get those answers to those questions, only then they'll be in a position to kind of announce the squad for the remaining 3 test matches of the series. So anytime middle of the week or by the end of this week, working day, I am expecting a squad update, because the team is likely to assemble in Rajkot on February 12th. The squad dispersed after the 2nd test. The team will assemble on February 12th and they'll have their first practice session on 13th Feb. So that before the test gets underway on 13th Feb. So anytime around say 18th, I think what should be announced. Okay, and now let's go to the next question, Sahil. This question is related to KS Bharath and his place in the 11. We saw what he did in the first 2 tests, 6 catches in total that he got, and a missed stumping chance, and also the numbers that I already mentioned. I'll say it again: 41, 28, 17, and 6. That's what he scored in the first 2 test matches. Do you think that he should be there in the 11? No, shouldn't be there. I can't square turners by any stretch of imagination. You need a keeper, you need a good keeper, you need an effective keeper, but you don't really need a keeper at the cost of a batter also now. Because in this 11 right now, when we are without Virat Kohli, I'm just assuming, when you're without Virat Kohli, when you're without Ravindra Jadeja, when you're without KL Rahul, you need the keeper to bat too, right? You're not living in a generation where you need the keeper just to keep. In this playing 11, if Akshar Patel is coming ahead of KS Bharath, I understand there's a lefty-righty logic to that too. But, I just look at it this way, boss. Akshar is being promoted ahead of you. So the management clearly isn't convinced with your batting skills, right? And you have done very little justice to the opportunities which you have received. Border Gavaskar Trophy was a different ball game altogether. The pitches were extremely, extremely difficult, except the last Ahmedabad test. I think पहले 3 टेस्ट के अंदर तो बॉल कुछ भी कर रहा था यार, कहीं पे भी डालो कुछ भी हो रहा था.
tell me how many times has the ball turned square in those two test matches. I think the wickets were beautiful. These are the which we need regularly on Indian soil just for our batters to kind of grow in confidence. And this was a brilliant opportunity for KS Bharath to do something with the bat, which unfortunately he didn't, except that 41 in the first test, if I'm not wrong. एक अच्छा तो लगाओ यार, ऐसे नहीं होगा विकेट के अंदर. और आप टॉम हार्टली, रियान अहमद, शोएब अख्तर इन लोग को खेल रहे हो. With all due respect to them, we are kind of throwing away wickets against them. They don't have that much experience bowling on Indian soil. Khelo yaar. How difficult is that? And management will thank you from this test. You should be riding high on confidence. And right now, stands a good keeper. I'm not saying the brilliant keeper because in the national arena, but he's a good keeper. He bats with intent. He has the long waiting game too. Now is the time to blood him in. Yes. You're not looking back at Ishan Kishan right now. That's the feeling I'm getting. If you're not, then get in Dhurv Jurel. Simple. इतना पेशेंस नहीं है इंडियन क्रिकेट में बॉस. 1.5 1.7 बिलियन का जनता है जहां पे लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और केएस भरत ही आपको मिला. आपको उसको 10 टेस्ट मैच खिलाने हैं क्या? हो गया ना अब. Yeah. Taus, what are your thoughts around this whole debate between KS Bharath and Dhurv Jurel? Also, Taus, when we're talking about KS Bharath, Rahul Dravid said that KS Bharath's wicket keeping is pretty good, but yes, he has issues with batting, so he'll have to bat. He's a youngster. He will take his time. We need to give time to him. Do you think that he needs time now? Because KS Bharath has played a lot of cricket. Do you think even now he needs time? How much more time he needs? I mean, ये टाइम क्यों चाहिए? अडॉप्ट करने के लिए, गेम इंप्रूव करने के लिए, या आपको मैच जीतने के लिए? यंगस्टर है, 30 year old is a youngster. I don't know. I mean, he's a veteran now in cricket. So राहुल द्रविड़ ने उनको यंगस्टर बोल के I don't know क्यों ऐसा एड्रेस किया. But yeah, where is the time? यार, you have played enough cricket. You know, you should by now you should have known exactly. You know, you should have had that confidence to bat and at that level. आप वो हमेशा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं. आप विकेट कीपर जबरदस्त है. यू माइट बी बेटर देन ईशान किशन, यू माइट बी बेटर देन ध्रुव जुरेल, बट देन हमारी डिबेट होती है ना कभी कभी कि भाई कौन वो 6th या 7th ऑप्शन होना चाहिए बल्लेबाजों में, कौन वो ऑलराउंडर होना चाहिए, कौन हम क्यों लैक कर रहे हैं ऑलराउंडर. तो भाई विकेट कीपर के लिए भी होना चाहिए ना ये फैक्टर्स कि भाई हमारा एक तो ऐसी बैटिंग डेप्थ नहीं, या हम तो हमारा बैटिंग उधर ही खत्म हो जाता है 5th श्रेयस अय्यर के बाद. Then वहां पर suddenly you have Akshar Patel to come and hit those shots. He'll take his chances. Ravindra Jadeja might play. Finally he has come back to form. नहीं तो उनका form लल रहा है. उसके बाद you don't have batting at all. Look at Shikhar Bharat, a batsman, wicket-keeper is so important right now in today's cricket, and MS Dhoni era has completely changed it. उसके पहले आपके पास नयन मोंगिया था, चल जाता था. वो mindset चल जाता था. अभी नहीं चलता because today it's all baseball cricket. Today they are playing because of the leagues. They have changed their game. They have adopted that aggressive format style of play. So you need to have a batsman. You cannot stick to the typical orthodox mindset. यार विकेट कीपर है चल जाएगा, उसको बैटिंग नहीं करना है. ऐसा नहीं होता टुडे. आज आपको जीतना है तो you need to have that extra batting depth also with that aggression. aggressive streak होना चाहिए उसके बैटिंग में. I mean जो और confidence. सामने वाले डरे बैसबॉल विकेट या जो हार्टली डाल रहा है या बशीर और मे बी जैक लीच और जोरू, they should be scared. मतलब he's coming in the middle order, he'll whack you out somewhere. I mean there is a chance that this guy is confident, he will stick a partnership with his partner or maybe support him. But वो कहीं से भी मुझे नहीं दिखता शिखर भरत को लेकर. He lacks confidence, temperament नहीं. हम हर बार बात करते रहते हो आईपीएल से टेम्परेमेंट लेके आते बंदे, आईपीएल में खेले तो टेम्परेमेंट हो गया, बट वहां पर वो बंदा खेला नहीं, तो यहाँ पर भी टेम्परेमेंट दिख रहा नहीं है. विकेट कीपिंग नो डाउट एट ऑल. नहीं, वो जिस तरीके से आउट भी हो रहे हैं ताउस, जिस तरीके से आउट भी हो रहे हैं, जिस तरीके के शॉट्स पे वो आउट हो रहे हैं, इट्स वेरी इमेच्योर एंड इररिस्पांसिबल, एंड उनके नाम के आगे विकेट कीपर बैटर लगा है, व्हिच वो लिमिटेशंस है सुरम्या, दैट्स लिमिटेशन. इररिस्पांसिबल वो उसका लिमिटेशन. ही कैन नॉट प्ले लाइक अ साहा. He cannot play like a Saha. Saha was expressive. ये भी point है ना, yes. Talent था. He cannot play like that. I mean, limitations है उसका.
बिल्कुल। और देखिए उनके नाम के आगे विकेट कीपर बैटर लगा है, व्हिच मीन्स कि आपको दोनों रोल्स अच्छी तरह से निभाने हैं। यू जस्ट कांट कीप विकेट्स एंड गो बैक कि ठीक है आज का दिन का काम हो गया। यू हैव टू बैट एज वेल, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, क्योंकि बैटिंग हो ही नहीं रही है। चलिए लेट्स गो टू आवर रैपिड फायर राउंड। वुड रिक्वेस्ट आवर पैनलिस्ट टू कीप इट रैपिड एंड क्विक, एंड वुड रिक्वेस्ट आवर प्रोड्यूसर टू शूट द फर्स्ट क्वेश्चन। गुडीज मिलेगा First रैपिड one's फायर from के बाद? yes, yes, yes. You'll get good goodies. You'll Coffee get a hamper. hamper. You need a coffee hamper. Yeah. Okay. Kuldeep Singh, Ishan knows everything, depends on IPL, so no point for playing Ranji. He will be eyeing on T20 World Cup. साहिल, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि कैसे वो शायद आईपीएल में दिख सकते हैं, एंड जेमी ने इस पर बात करी। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि लोग फिर कहने लगे अरे ईशान तो सिर्फ आईपीएल में नजर आते हैं, उनको और कोई चीज खेलना नहीं है। क्या लगता है आपको कि वो सीधा अब आईपीएल में ही नजर आएंगे? फीलिंग आ रहा है यार, मतलब आज our colleague Soumya tried to speak to some people in Jharkhand, and they still don't have an update on Ishan Kishan. मतलब the last he spoke was this afternoon. He checked for an update on Ishan. They still don't have an update whether he's going to join the squad. So it's happening, you know. इसके बाद सिर्फ एक रणजी का गेम बचा है। अब सीधा आईपीएल ही दिख रहा है यार। अगर उसको नहीं रणजी खेलना तो प्रायोरिटाइज कर दिया होगा उसने कि मेरे को व्हाइट बॉल खेल के अब T20 वर्ल्ड कप टारगेट करना है। टेस्ट पे तो मेरे को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। Maybe that might be the case. Let's move to the next one. From Sameer Kumar, क्या हम अक्सर को निकालकर जडेजा, कुलदीप, अश्विन तीनों को प्लेइंग 11 में रख सकते हैं? ताउस, क्या ये पॉसिबल हो सकता है या फिर ये करना चाहिए या नहीं? नहीं तो अक्सर को निकाल कर जडेजा, कुलदीप, हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ यार। मैं तो पहले ही से फर्स्ट टेस्ट खत्म होने के बाद इनफैक्ट बीच में मैंने बोला था you don't need Aksar right now. But can we answer this because the debate is about Ishan Kishan? I think you've given the answer, and Sameer Kumar must be happy with this answer. Let's go to the next one. I wouldn't mind getting out Aksar. This one's for Sahil from Harsh Purohit. Any update on Virat? Would request Sahil to please give an elaborated answer on this. We have a lot of questions around Virat Kohli. तो आप starting से लेकर end तक जो भी आपके पास information है वो आप सब दे दीजिए viewers को. There is no information on Virat Kohli yet. Not with me, not with anyone in the board yet. No one knows. And the last Rahul said that they'll establish contact with him and check on his availability after the second test. अभी तक कुछ नहीं आया है. अभी तक सन्नाटा है. Everyone is a bubble with when it comes to Virat. And I would request everyone, because there were some rumors floating around his mother's health. I read them on Instagram last week, but I think it was good on his brother that he posted that clarification. His sister also reposted that story. So I think वो इतना speculate मत करो यार, because the way the BCCI kind of framed that release, उसमें लग तो रहा था कि the matter is quite serious and Virat wouldn't miss test matches for, you know, cutting cakes at a party, boss. Let's be very clear with it. He prioritizes test cricket, you know, unlike anyone I've seen in the past, boss. He's cut from a different cloth when it comes to test cricket. So कुछ मैटर सीरियस रहेगा तभी उसने वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है यार. मतलब वो 5 टेस्ट मैच का सीरीज तो कतई नहीं छोड़ने वाला. जब वो T20 सीरीज खेल गया अफगानिस्तान के साथ आके, तो अब आप सोच सकते हो ना कितना प्रायोरिटाइज करेगा वो टेस्ट क्रिकेट. वो करेगा यार. But I think we'll have to wait, because that is why I personally feel that there is that delay in the squad announcement for the third test. वरना इतना टाइम नहीं लगना था. अभी तक तो स्क्वाड इनको असेंबल कर देना चाहिए, मतलब अनाउंस कर देना चाहिए था आज या कल के अंदर. But by the end of this week, if not tomorrow or day after, we should have the squad. But there's still no update on Virat. I think we should wait for AB de Villiers to come out with another news. Yeah, AB de Villiers should come out with another podcast. I think वो podcast fire हो रहा है यार. साउथ अफ्रीका वाला कल जो बाउचर का पॉडकास्ट था उसने अलग आग लगा दी है इंडिया के अंदर. मतलब कुछ हो रहा है. साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द डीन एल्गार पॉडकास्ट, दैट स्पिटिंग एपिसोड, टू दिस स्पिटिंग एपिसोड. South African players are in a lot of currency right now. Oh yeah, absolutely. और सोशल मीडिया पे तो आपको आजकल सिर्फ वही नजर आएगा, ABD and Virat. That's it. Sports fan पूछ रहे हैं, if a player has asked for mental break, it's better not to do rumor mongering. I don't think so. Anyone here did any rumor mongering, and
बिल्कुल नहीं। आपने हाँ हाँ एंड आपके ही सवाल हैं जो कि ईशान किशन कहाँ पर है, क्या करे। वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने यही बोला है कि हमें कोई इतना अपडेट नहीं है, जो अपडेट्स है वो हमने आपके सामने क्लियरली रख रहे हैं। सो देयर इज नो रूमर मॉन्गरिंग हैपनिंग ओवर हियर। उन्होंने मेंटल ब्रेक बोला था, उनको ब्रेक मिला साउथ अफ्रीका सीरीज से, वो नहीं खेले अफगानिस्तान के खिलाफ भी, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खेल रहे हैं। विल सी अगर उनको खेला होगा, सो ही विल बी देयर इन द टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Ujjwal Mora is saying modern day batters have forgotten the art of grinding. Everyone wants to hit their way out of trouble. Test matches need Pujara and Elgar type of batters. ये बहुत समय से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं पुजारा को वापस आ जाना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन दिया भी है लाइव सेशन में। तो उस क्या लगता है, अगर हम बार बार पुजारा और एल्गर टाइप ऑफ प्लेयर्स पर जाते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? ये एक बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है। He's saying type of batsman. He's not saying get back Pujara right now because Dean Elgar or Pujara. But then in that way also ना दाउस उनके टाइप के, किस तरीके के टाइप के, क्या हमें उनके टाइप के बैटर्स चाहिए या फिर हमें वो बैटर्स चाहिए जो ऑलरेडी है टीम में? मतलब क्या होना चाहिए? उज्जवल he's been trying to say, मतलब चौथी पांचवें दिन उन्होंने कमेंट किया और ये आता रहता है। See, he doesn't want like उनके टाइप के बैट्समैन, मतलब नंबर 3 जो हम बहुत बार डिबेट करते हैं कि शुभमन गिल फ्लैम्बॉयंट है। शुभमन गिल has too many shots. He doesn't grind like a Pujara or a Dean Elgar. He doesn't take those body blows. So he's saying कि body blows जो ले सकता है, जो grind कर सकता है, जो टाइम बिता सकता है विकेट पे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब कोलैप्स होता है सडनली टॉप ऑर्डर कोलैप्स या मिडिल ऑर्डर, तो आपको बीच में एक नंबर 3 या नंबर 4 पे एक बंदा चाहिए, जो विराट कोहली तो है ही, मगर वो नंबर 3 पे चाहिए एक बंदा जो ग्राइंड करे और आपका टीम बांध के रखे, बाकी चारों तरफ वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सके और रन बढ़ा सके और देन टाइम बाय कर सके ज्यादा से ज्यादा। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, व्हिच आई एग्री टू इट। So, Taos, on one side, we're talking about aggressive style of play, okay, even in test cricket. उस सिनेरियो में क्या हमें पुजारा और एल्गर टाइप के बैटर्स अभी भी चाहिए या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल। नहीं, और अगर हमें चाहिए तो हमें क्यों चाहिए? क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं? हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास इंग्लैंड जैसा टीम नहीं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम नहीं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल बैट्समैन के लिए, जो आईपीएल टाइप ऑफ बैट्समैन है। आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव काइंड ऑफ बैट्समैन, रोहित शर्मा से स्ट्रगल कर रहे हैं हम। यशस्वी आ गए। यशस्वी इज अनदर गाय हु इज फ्लैम्बॉयंट एज वेल एज ही नोज हाउ टू ग्राइंड, जो आपने देखा है पिछले मैच में डबल 100 मार के। ही टुक सम टाइम टू स्कोर डबल 100 व्हिच इज सो गुड, व्हिच लुक प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स। तो वैसे प्लेयर्स आपको चाहिए क्योंकि हमारी टीम एक्स्ट्रा फ्लैम्बॉयंट है। आई मीन आपको टेस्ट क्रिकेट एकदम ही अग्रेशन से नहीं खेलना, अग्रेशन चाहिए बट देन वो टाइम बाय भी करना है, नहीं तो फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल कैसे पहुंचेंगे? वैसे ही नहीं है टैलेंट। Okay, understood. Okay, let's move to the next one. Ashutosh Bajpai is asking, did the team want Ishan? They clearly favored KL over him in South Africa and only played him in West Indies because KL was injured. And Bharat is clearly a poor batter and not even a top-notch keeper. So in keeping all those points, did the team want Ishan to play? साहिल यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें कहना चाह रहे हैं, बट मुझे लगता है जो उनका एक बेस क्वेश्चन है वो ये है कि अगर टीम चाहती भी है उनको टीम में रखना, प्लेइंग 11 में रखना, या क्या वो फर्स्ट चॉइस है भी टीम के या नहीं, ये उनका सवाल है। आई थिंक अगर वो नहीं है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से उसको कैरी कर रहे हो। ही वाज देयर फॉर द 4 टेस्ट एग्जैक्टली अराउंड द सिमिलर टाइम लास्ट ईयर। सिंस देन ही हैज बीन विद द टीम अक्रॉस फॉर्मेट्स। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि वो रेकनिंग में क्यों नहीं थे जब वो ओडीआई टी20 टेस्ट तीनों स्क्वाड्स का हिस्सा थे। और अगर वो अभी रहता, मतलब if I kind of put 1+1 together, had he not asked for a break in South Africa and had he stayed with the team throughout the series, और वो घर वापस नहीं आता, mental break नहीं लेता, I saw him would have seen him starting the series against England, because he's a left-hander. He gives you intent in the middle order. He's a good keeper. Why wouldn't you have him in the 11? और मैं तो अभी भी कहूंगा यार, put all these nonsense chatter to rest. Get him in the squad for the 3rd test. Make him play the remaining 3 tests यार. वो आपको सब कुछ देता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऋषभ पंत वापस आ भी जाएंगे तो क्या गारंटी है ऋषभ पंत वैसा खेलने वाले हैं? 1 साल से उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट नहीं देखा है, 1-1.5 साल से, 1 साल से ऊपर हो चुका है।
तो मतलब हम इतना अज्यूम करके और प्रिज्यूम करके इंडियन क्रिकेट पे चलते हैं ना, हाँ अभी कोहली आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, हाँ अभी वो आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो बुला लो गांगुली को भी, तेंदुलकर को भी, द्रविड़ को भी, लक्ष्मण को भी, सबको पैड पहन के उतार दो ना फिर, अगर इतना इजी है ये सब सोच के करना। तब ईशान किशन बॉस हैंडल हिम विद केयर यार, ये 25-26 साल का लड़का है, मतलब मैं जेबी भाई के पॉइंट से भी अग्री करता हूँ कि लड़का है, यंग है, बट इतना नादान भी नहीं है कि रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना चाहिए। एग्जैक्टली खेलना चाहिए था उसको, 2 गेम ही कुड हैव इजीली प्लेड, अगर लंबा ब्रेक भी लेना था, लास्ट 2 गेम और उससे पहले जो पालम वाला गेम दिल्ली में हुआ था, इजीली खेल सकता था, इजीली खेल सकता था। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे दैट ही प्लेज द नेक्स्ट गेम स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of Feb, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो एक परसेप्शन जब क्रिएट हो जाएगा ना, तो फिर वो इट विल वेरी इजी टू शेड, वेरी डिफिकल्ट टू शेड दैट टैग। Right. Jason's writing, I think Dravid is right. If the newbies start reserving their spot and expect automatic entry in the team just because they did something someday in some year, that's not going to happen. I think, Jason, we have had a long chat over this throughout our live session so far. We had a chat over what Rahul Dravid said. Did he make sense in what he said? And we also had a chat around what Ishan Kishan had to do. Sahil, yes. I'll just add to this point, if Rahul Dravid, Rohit Sharma are so hell-bent on following that process, why doesn't that process applied or did apply or didn't apply to someone like KL Rahul? Why did he walk into the test squad for South Africa series? On what basis? कितना रणजी ट्रॉफी गेम खेल के आया था केएल राहुल? केएल राहुल को लाल बॉल में टेस्ट करना था, ओपनर से मिडिल ऑर्डर उसको बनाया, सैंपल साइज क्या था टेस्टिंग का? व्हाइट बॉल फॉर्म पे गए थे ना आप। You were so confident in a white ball keeper to make him a red ball keeper on spicy wickets like South Africa. Then conveniently you decided कि बॉस नहीं, इंडिया में तो उसकी बॉडी पे लोड आएगा, यहाँ केएस भरत को वापस ले आते हैं। केएस भरत वापस आ गया तो राहुल बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने रन कर दिए। वो रन करने का मौका किसी और को भी तो दो, वो प्रोसेस डिच करो ना किसी और के लिए भी। मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से आप सब लोग फ्लोट करते हैं, मतलब रूल्स हैं तो सब पे लगाओ बॉस, ऐसे नो वन कैन जस्ट वॉक इनटू 11। मतलब हर कोई विराट कोहली नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर, हर कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। इस बात पे भी सवाल उठेंगे ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आपके टी20 टीम में कैसे है, फिर तो बहुत सारे इस अगर ये अगर वही कह रहा हूँ, उन दोनों को अगर आप बाजू हटाओगे, आप केएल राहुल की अगर आप बात करोगे, हाउ डिड केएल राहुल what made him deserve that spot in the test squad? मैं तो ये पूछ रहा हूँ बस, वेरी सिंपली, व्हाइट बॉल फॉर्म ही देखा था ना आपने, तो अब यहाँ रणजी के क्रिटिक्स क्यों आ गए हैं कि केएल राहुल को क्यों नहीं रणजी खिलाया? फिर खिला देते उसको भी 2-3 गेम। Jason कह रहे हैं he's a pro and batter, that's the difference. But Jason, so is Ishan Kishan, and I think some of you, I'm not pointed out, but there were similar set of people who were kind of had their swords out against KL Rahul when he wasn't doing well against that Australian side in the first 2 tests of the Border Gavaskar Trophy. तब तो सबने बोला केएल को ड्रॉप करो, अब ड्रॉप हो गया तो कह रहे केएल वापस आ गया तो कह रहे ही इज अ प्रूवन बैटर। प्रूफ तो सबने सब कुछ करा है ना, तेंदुलकर ने भी 100 बना रखा है ना, तो वो प्रूफ करने का तेंदुलकर खेलते ही थोड़ी रहेंगे या खेलते ही थोड़ी रहे थे। मतलब रिसेंसी बायस और रिसेंसी फॉर्म आप देखते हो ना। सो ये आई डोंट नो व्हाई सिलेक्शंस ओवरलैप, टी20 के बेसिस पे ओडीआई में ले लेते हो, ओडीआई के बेसिस पे टेस्ट पे ले लेते हो, यही तो प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट का। Yeah, that's right. Ujjwal Moore is saying too much ambiguity. Why can't BCCI follow सीधी बात, no bakwas? This is the reason for failure in big events. Ujjwal, इस पर भी हम काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं. Let's move to the next comment. Ashutosh Bajpayee is asking, is it like the Anil Kumble rule that players have to play a domestic match to prove their fitness? Sahil, is there any such rule? There's no rule. No such rule was ever followed in Indian cricket. Anil Kumble tried to put a process in place, but वो process जब तक put करते उससे पहले उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गया था टीम के अंदर, तो वही नहीं हो पाया। मतलब अभी मेरे ध्यान में maybe ताउस भाई could have something to add here during Kumble's era. अगर कुंबले के टाइम पे ऐसा कुछ रहा था, कुंबले के टाइम पे चैटर तो था कि डोमेस्टिक क्रिकेट बोला जाता था कि आप खेलो जब भी टाइम अवेलेबल है खेलो। मतलब ऐसा मतलब कोई रूल मतलब वो सिर्फ ईशान के लिए नहीं होगा यार कि ईशान को रणजी खेलना ही खेलना है, तो इंडिया ये भी खेल सकता है ना। ऐसा नहीं है, क्रिकेट खिलाना है ना आपको उसको, अब वो रणजी खेले इंडिया ये खेले उससे क्या फर्क पड़ता है। Yep. Okay, next question please. Vyan Singh is asking, what if KL was concussed in first innings of South Africa tour? Who would have been keeping? You can't be selfish. I'm really disappointed by Ishan's behavior. Taus, what's your take on this? Selfish, I wouldn't say. I mean, देखो
Clearly, honestly बताऊं, this guy is right now not in the frame of mind to play a red ball cricket. अगर उसको interest था, अगर या interest नहीं, I wouldn't say, if he was in the proper, he wanted to come back, he would have gone on to play a domestic cricket, Ranji Trophy, जो अभी फिलहाल चालू है. And right now he's played just 2 test matches. Top proven performer, unfortunately, red ball cricket में नहीं. तो आप इधर फिलहाल तो आप आईपीएल देख रहे हो, फिलहाल आपको चांस देख रहे हो T20 वर्ल्ड कप का. फिलहाल वो भी आप देखिए अंदर बाहर रहे, कंसिस्टेंसी वहां पर भी नहीं मिली आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में. तो बहुत मुश्किल है. आई मीन कॉन्क्वेस्ट होते फर्स्ट इनिंग वुड हैव बीन. अब वो तो केएल राहुल वो टूर तो चला गया, अब उसके बारे में बात करके फायदा नहीं. बट देन सेल्फिश, आई डोंट नो क्या फ्रेम ऑफ माइंड में है इस वक्त. ही इज लुकिंग हैप्पी राइट नाउ इन ऑन इंस्टाग्राम वीडियोस. राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आईपीएल खेलने दो उसको, अभी क्या बोलेंगे इसके आगे. ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यार. Yeah. We just wish that we get to see him soon on field. Next question, please. Our batting order is too weak to afford zero contribution from wicket-keeper batter, so Jurel should be given chance now instead of Bharat. Yes, Sahil, please go ahead. Yeah, that's what I'm saying. I completely agree with this. We just can't afford a wicket-keeper who can't bat right now. We need a wicket-keeper who can make substantial contribution. I'm not saying कि 6-7 पे आके 100 लगा दो, but you need meaty contributions यार. मतलब you just can't afford, because now with Kuldeep also coming into the bowling picture, with Jadeja not available yet, Yeah. Your tail kind of wears a very long look, and there's too much on Ashwin and Aksar's shoulders all the time with the bat कि बॉस अब कोई नहीं कर रहा तो अब इन दोनों को रन करने पड़ेंगे. तो कीपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यार. मतलब उसके अंदर we need to see that happen. True. Next question. Anuj Rawat, a hard hitter, wicket-keeper. Samson, Prabh Simran, a hard hitter, wicket-keeper. Jurel, Jitesh Sharma, Jagdeesan just scored 200. So there are talented wicket-keepers 100 times better than KS Bharath. अब इन्होंने इतने ज़्यादा नाम दे दिए हैं. ताउस और साहिल से पूछ लेते हैं कि आप लोगों को चॉइस मिला तो आप किसको रखना चाहेंगे. साहिल, आप शुरुआत कीजिए. अनुज से लेकर जगदीशन तक किसे देखना चाहेंगे? Anuj Rawat is still not the first choice wicketkeeper in Delhi's Ranji squad. He just had 140 this season, and against MP he played a very rash shot which wasn't required. His first class average is not more than 30 right now. So I don't know why Anuj Rawat's name has come in this discussion. Sanju Samson, I think वो आईपीएल में भी कुछ नहीं किया. अनुज, हाँ, नाम आईपीएल के है पर वो आईपीएल में भी कुछ नहीं किया. अब संजू सैमसन पे आता हूँ. संजू सैमसन को एक फुल सीजन केरला के लिए पहले खेलने दो, बैटिंग और कीपिंग दोनों करने दो, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से कीपिंग करते हैं व्हेन इट कम्स टू रणजी ट्रॉफी. एंड फर्स्ट ही हैज टू डू दैट कंसिस्टेंटली. Prabh Singh struggled as an opener. I think start of the season he was opening for Punjab, but the wickets were too spicy for his technique, so he has moved to the middle order now. चंडीगढ़ के खिलाफ उसने बड़ा 100 लगाया है अपने भाई के साथ, बड़ा पार्टनरशिप किया अनमोल प्रीत सिंह के साथ, and now he's batting at 4. So let him get used to that position first before jumping the gun and kind of deciding that Prabh Singh is the right fit for the middle order. Dhurv Jurel, yes, I completely agree. Jitesh Sharma, I don't know yaar whether he has that long game right now, because उसका game इतना modeled है ना for the T20 and 50 over format. He goes really hard at the ball. मतलब वैसा वाला mold का batter है. So I'm not really sure about Jitesh Sharma. Jagdeesan just scored a 300. I think triple 100 किया कि 300 किया. No, double 100 किया. Yes, he scored a double 100 and also 100 back-to-back games. और I think last match गोवा के खिलाफ इसने 50 भी किया था. So जगदीशन अभी रन शुरू किया है करना लाल बॉल के अंदर, मतलब कंसिस्टेंटली. उसका भी एक लीन पैच आ गया था आफ्टर दैट ग्लोरियस व्हाइट बॉल सीजन विजयदारी ट्रॉफी, जहां उन्होंने बैक-टू-बैक 100s लगाए थे तमिलनाडु के लिए. So अभी I agree that there are keepers who are better than KS Bharath, but they need to be elevated to India A first before they come into India reckoning. So Anuj Rawat, Prabh Simran Singh, Jitesh Sharma, Sanju Samson अभी उस डिस्कशन में भी मुझे नहीं दिख रहे. Even Jagdeeshan, because Jagdeeshan is an opener. So only player who comes to my mind right now is Dhurv Jurel. और कोई नाम नहीं आ रहा. उपेंद्र यादव, yes, but he hasn't done justice to the opportunities which he has received. उपेंद्र यादव को प्लेटर पे मिल गया था यार, मतलब बहुत चीजें. अगर वो एक अच्छा सीजन रेलवेज के लिए देता और इंडिया ए में अपना फॉर्म रेप्लिकेट करता, maybe he could have been in a discussion for the test squad, but he didn't score. So you can't blame anyone but himself. And just for numbers, our producer has mentioned about Jagdeesan 321 versus Chandigarh, 245 versus Railways. So उस हिसाब से वियान सिंह भी ये कमेंट दे रहे होंगे. ताउस क्विकली आपको चॉइस मिलता, साहिल ने तो ऑब्वियसली जुरेल का नाम लिया ही है, आपको चॉइस मिलता तो आप किसको चूज करते? मुझे चॉइस मिलता तो मैं पहले ईशान किशन को जाता.
then Dhurv Jurel, then other guys. See, right now you can see, I mean, these people are mostly they have done extraordinarily well, or maybe they have impressed in IPL. और यहाँ पर सारे viewers आईपीएल को देखकर टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा वो कर रहे स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई जैसे कहते हैं कि आईपीएल परफॉर्मेंस देखकर आप टेस्ट क्रिकेट में इनको बिठाने की कोशिश कर रहे हो, आप कहाँ नंबर कौन सा बैटिंग कर रहे हैं वो पोजीशन नहीं देख रहे हो, आप किस कैसी विकेट कम कीपिंग करते हैं वो नहीं देख रहे हो, तो सिर्फ आपने आईपीएल का लाइनअप यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और कुछ नहीं है. But then, yeah, right now, I mean, now that this guy KS Bharath is not doing well, he's not impressive, lacks confidence. Dhurv Jurel is the best guy. Okay, next question, please. Fayaz लिख रहे हैं Kohli need not be pushed into the squad at this stage when the team has just won a test against a formidable side. क्यों? Why? क्यों नहीं आने चाहिए? मेरा सवाल है आपसे फयाज, आप आंसर कर सकते हैं तो प्लीज आंसर करिए. वुड लव टू नो योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. This one's for Sahil from Kuldeep. Any news about Harry Brook? Have you heard anything from English media? Kuldeep, unfortunately, I wasn't traveling for the first two tests. I will be in Rajkot on 12th of February, evening of 12th of Feb. So hopefully I'll get an update for you closer to the test match. But right now I have no update on Harry Brook, whether he's kind of rejoining the squad. I still don't have anything on him yet. I'll ask my colleague Vineet if he heard something in the press box during the first two tests, but nothing as of now. Like, I haven't heard anything. Okay, next question, please. Indian left-handed batters are scoring the majority of the runs. So Sai Sudarshan, a left-hander and an excellent player of spin, should be included in the squad if Virat doesn't feature in the series. Can this happen? Taus, क्या ये होना भी चाहिए? ये भी एक और सवाल है. Sai Sudarshan in place of Virat Kohli. I don't think so they'll make any major changes यार. केएल अगर विराट भी नहीं है तो केएल शायद वापस आ जाए, फिर जडेजा जाए, तो जगह कहाँ बनेगी? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पतिदार हैं, यू हैव सरफराज खान, यू हैव आई मीन शुभमन गिल हैज स्कोर्ड 100, तो बहुत दूर दूर तक मुश्किल है. बट देन ही शुड कीप ऑन स्कोरिंग एंड गुड दैट लेफ्ट हैंडर्स, इवन आई एम अ लेफ्ट हैंडर, सो आई हैव सिंपैथीज फॉर लेफ्ट हैंडर्स. सॉफ्ट कॉर्नर है. ओके, नेक्स्ट कमेंट प्लीज. क्या हमारी बैटिंग ऑल आउट होने से बचकर डिक्लेयर करने का मौका देगी क्या? ये तो बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट सा सवाल है साहिल. क्या मौका मिलेगा? इसमें क्या है, मतलब ऑल आउट होने से बचकर, ऑल आउट होने से कौन क्यों बचेगा कोई यार? मतलब मैं तो कहूंगा 10 नंबर का 6 रन भी फालतू बनाएगा और वो 6 रन अगर 5 रन विन में आपका रिजल्ट करते हैं तो नथिंग लाइक इट ना. तो क्यों डरना क्यों है ऑल आउट होने से? कोई एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी डिडक्ट होते हैं अगर आप ऑल आउट हो गए. क्रिकेट है यार, 10 में 11 नंबर तक बैटिंग कराओ. Okay, just couple of questions more. Ishan Sharma is still grinding out in Ranji. Harsh Purohit का ये comment है. Sahil, are you laughing? Okay, आप करिए reply Harsh को. What is grind, Harsh? He has just played 2 games yaar. One was the home game against Pondicherry and the last game was again at home against Baroda. How does that qualify to be a Ranji Trophy grind? Because बरोडा के अगेंस्ट आपने एक ही इनिंग में बॉल डाला. आई थिंक 20 ओवर ईशान ने डाला and he picked 2 wickets. Yes, he took Shashwat Rawat and another Baroda opener. और Pondicherry के अगेंस्ट I think he don't look the Ishan Sharma which we have seen in the past. He's just playing home games for Delhi. I'm not sure whether he has travelled for the next game to Dharamshala where Delhi take on Himachal Pradesh on the 9th of February. But grind क्या होता है यार? He himself has picked just home games. Grind होता है जो उमेश यादव या अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं कि you're travelling both home and away. अजिंक्य रहाणे had a neck issue but he still travelled with the side to Bihar. वो गेम खेला नहीं बट वो साइड के साथ थे वहां पे. उमेश यादव सारे गेम खेल रहे हैं. सारा गेम खेलो तब ग्राइंड बोलेंगे ना. 2 गेम खेल के पिक एंड चूज करके क्या ग्राइंड हुआ? बट मेरे पास क्वेश्चन है. आई हैव अ क्वेश्चन ऑन ईशान शर्मा, टेकिंग इट फॉरवर्ड इफ आई कैन आस्क सुरम्या. साहिल से ईशान शर्मा के प्लान्स क्या है एग्जैक्टली राइट नाउ? व्हाट आर आईपीएल खेलना है बॉस. आईपीएल खेलना है. टेस्ट में तो कमबैक नहीं हो रहा भाई. टेस्ट में कहाँ आएगी अब टीम वापस? अब तो देखो बॉडी भी, मुझे नहीं लगता बॉडी भी अलाउ करेगी कि आप 25-30 ओवर दिन के लगातार डाल सको अब. बिकॉज आई सी हिम ओनली प्लेइंग द आईपीएल नाउ एंड प्रॉब्ली प्लेइंग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर दिल्ली फॉर अ कपल ऑफ सीजंस. बट ताउस भाई मेगा ऑक्शन जो होने वाला है ना, वो काफी वेटरन्स को एक रियलिटी चेक मिल जाएगा वेदर टीम्स काइंड ऑफ परसिस्ट विद देम. क्योंकि ईशान शर्मा लास्ट ऑक्शन में जो कोची में हुआ था वहां दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा था शायद.
जो कोची वाला ऑक्शन था वहां खरीदे गए थे, अब रिटेन हुए इस साल क्योंकि नया बॉल से अच्छा काम कर दिया कोटला के नए विकेट के ऊपर। बट मेगा ऑक्शन से पहले इन लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि ईशान शर्मा को रिटेन तो नहीं करेगा दिल्ली कैपिटल्स, रिटेंशन में तो 3 ही हो सकते हैं और ना राइट टू मैच कार्ड यूज होगा। सो वो मेगा ऑक्शन पे क्लियर हो जाएगा कि कितना ईशान शर्मा, क्योंकि एक बार आप आईपीएल में नहीं पिक हुए फिर आप क्यों सईद मुश्ताक और विजय हजारे ट्रॉफी खेलोगे ना, फिर तो लेजेंड्स लीग बची हुई है खेलने के लिए यार। Yeah. Okay, we'll take a last question of the day. Fayaz, we have some time to build a team which is less dependent on Kohli. Kohli is a great player, but India need other Kohlis too. Fayaz, मुझे लगता है कि बहुत सारे लाइव सेशंस पे हमने इस पर बात करी है कि आगे आने वाले समय में हमें और अच्छे बैटर्स चाहिए होंगे, एंड ऑब्वियसली कोहली को तो कोई भी एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता है. विराट कोहली इज विराट कोहली, लेकिन यू राइट इन अ वे आगे आने वाले टाइम के लिए भी हमें टीम के बारे में सोचना होगा. बट फॉर नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दी दिस 5-match टेस्ट सीरीज, और हम उस पर ही अपनी ये डिस्कशन रखना चाहेंगे. We'll definitely take your point in some other live session, and we'll talk about the future team as well. Thank you so much, Fayaz, for your comment, and thank you so much everyone for your comments. It was great talking to you, Sahil and Taus. See you soon again. Thanks a lot. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब